Welcome to CA Wisdom channel. So we are going to take chapter number 6. Okay. So let's see what is chapter number 6. So chapter number 6 is all about functional level strategies. So functional level या operational level भी बोला जा सकता है. So there are many functions in a business which takes place like marketing, finance, production, logistics, HR, R&D. Okay, so these are some of the function and we will get into this in detail. Okay, now introduction. Strategy of one functional area cannot be looked at in isolation. कभी भी एक फंक्शन को कभी भी सिंगल या आइसोलेटली हम पढ़ नहीं पाएंगे या स्ट्रैटेजी बना नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि एक दूसरे से हर एक फंक्शन इंटरलिंक्ड होता है. दैट्स वाई. ओके, एंड उसका सिनर्जाइज भी होता है. मीन्स एक का बेनिफिट दूसरा के ऊपर भी होता है, एक का डिसएडवांटेज दूसरा के ऊपर भी होता है. ओके, that's why functional strategies play two important roles. Okay, firstly they provide support to the overall business strategy. So फंक्शनल लेवल में क्या करते हो लोग, फंक्शनल लेवल का फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा है. सेकेंडली functional manager will work so as to ensure better performance in their respective functional area. functional manager काम करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि उनका फंक्शनल एरिया जो भी है वो बेटर परफॉर्म कर पाए. सो दिस आर द टू मेजर इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी. सो इम्पॉर्टेंस क्या है इनका? सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. सो एक डायरेक्शन मिल जाता है फंक्शनल स्टाफ को कि क्या काम करना है, ओके, कैसे आगे बढ़ना है. ओके, एक्ट एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज. सो कुछ कामों को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू फंक्शनल स्ट्रैटेजीज. ओके, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी बनाया जा सकता है थ्रू फंक्शनल स्ट्रैटेजीज. Similar situation occurring in different functional areas are handled in a consistent manner by the functional manager. So एक कोई भी फंक्शनल मैनेजर है वो सर्टेन फंक्शन एरिया में काम कर रहा है एंड उनको उसका एक्सपर्टीज हो गया कि कैसे फंक्शनल स्ट्रैटेजीज अप्लाई होता है वो सिचुएशन वो फंक्शनल एरिया में. लाइकवाइज ही कैन अप्लाई दैट strategies in different functional area also and can handle in a consistent manner. Okay, now let's go to the one of the major functional area, that is marketing strategies. So marketing is a social, which means social means it's we have to interconnect or interact with others. Okay, in this marketing strategy we have to go and discuss, we have to engage the audience, we have to gather the mass. Okay, so that means social and managerial process. Okay, it's a managerial process. That's why marketing is a social and managerial process. Marketing induces in moving people closer to making a decision to purchase and facilitate a sale. Means marketing क्या करता है? Marketing induces या influence people to purchase or to sell, at least to make a decision to whether to purchase or sell. Okay, so that is the function or that is the objective of marketing. Okay, the marketing process is a process of analyzing market opportunity. सबसे पहले market opportunities देखना, फिर select target markets. target markets क्या है? हम किन markets को हम target कर रहे हैं, whether babies or mothers or children's or VIP or poor people or middle class, which market, okay, we are targeting that. Developing the market mix, 4 P's we will study. Okay, and managing the marketing effort. Okay, objectives of marketing. So the first objective is to deliver value to customers. Okay, but वैल्यू सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू नहीं आ सकता. ओके, सो इट नीड्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स. ओके, लाइक प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए, सो बंच ऑफ अदर थिंग्स. ओके, सेकेंड इज कनेक्टिंग विद customers. So yes, is the major thing in marketing. So to succeed in today's competitive marketplace, companies must be customer centered. Okay, as we all know, customer is the king in a market. So yes, customer centered. They must win customer from competitors. Okay, and keep them by delivering greater value. Okay, हम customers को
कैसे जीत पाएंगे अगेंस्ट फ्रॉम दी कॉम्पिटिटर, कैसे बाय गिविंग देम ग्रेटर वैल्यू। ओके, जैसे हम कुछ वैल्यू दे देंगे जो कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हो, तो अपने आप जो भी कस्टमर्स हो हम वो हम दे विल कनेक्ट विद अस। ओके, सो मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स। जो मार्केटिंग करते मार्केटिंग वेरिएबल्स बहुत सारा होता है, उसमें से जो जो कंट्रोलेबल होते हैं उनको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। ओके, that the firm blends to produce the response it wants in the target market. Okay, these variables are often referred to as the 4 P's. Okay, let's study what it is. 4 P's. So the 4 P's in a seller perception are product, price, place and promotion. We will study in detail. Okay, but the same things in buyer's perception are similar. Like if it is a product, from buyer's perception it will be a solution for him. Okay, if it is a price, then it will be a cost for a buyer. Okay, if it is a place, it will be a convenience for their buyer. If it is a promotion, it will be a communication for the buyer. Okay, it's from the buyer's perception. Okay, now let's go into detail about 4 P's. Okay, so first P is product. So as we all know, product means goods or services, or goods and services. Okay, so this is product. Okay, so strategies are needed for managing existing product over time, adding new ones and dropping failed products. मतलब जो प्रोडक्ट अभी बेच रहे कंपनी, उसको मैनेज करना, या फिर नया प्रोडक्ट बनाना, या फिर जो फेल होता जा रहा है वो प्रोडक्ट्स को बंद करना, ड्रॉप आउट करना. Strategic decisions must also be made regarding branding, packaging and other product features such as warranties. Okay, so product related branding, packaging कैसा है, product का features कैसा है, warranties है कि नहीं, so this all makes a product. Okay, products are industrial or consumer products, essential or luxury products, durables or perishable products. Okay, now comes the second P, that is price. Okay, so what is price? So price stands for the amount of money customers have to pay to obtain that product. जो हमने अभी जो प्रोडक्ट पढ़ा, वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो पैसा कस्टमर देगा, ओके, दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ मनी, और दैट इज नोन एज प्राइस. ओके, necessary strategies pertain to the location of the customers, price, flexibility, related items within a product line and terms of sale. Okay, the price of a product is its composite expression of its value and utility. price क्या एक्सप्रेस करता है, प्राइस क्या डिनोट करता है, क्या प्राइस साइन क्या करता है, प्राइस बताता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू क्या है, वो प्रोडक्ट या सर्विस का यूटिलिटी क्या है. ओके, to the customer is demand, quality, reliability, safety, the competition it faces, the desire, profit and so on and on. Okay, skimming pricing policy, penetration pricing policy, we will see. Okay, now the third one is place. Okay, so place stands for company activities that make the product available to target consumer. So जहाँ पर भी प्रोडक्ट है वहाँ से वो टारगेट कंज्यूमर तक पहुँचाना, ओके, उसको बोलते हैं प्लेस. ओके, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मार्केटिंग डिसीजन इज चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल. सो मार्केटिंग चैनल होना चाहिए. सो प्रोडक्ट का इनपुट्स कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट बनेगा कैसा, प्रोडक्ट का आउटपुट कहाँ से जाएगा, एंड दिस इज नोन एज अ चैनल, मार्केटिंग चैनल, विच विल रीच टू द एंड कंज्यूमर और एंड कस्टमर. ओके, so strategies applicable to the intermediaries such as wholesalers and retailers must be designed. So intermediaries wholesale means किन से खरीदेंगे, retailers okay किन को बेचेंगे, okay, ये सब already डिसाइन कर देना चाहिए. Okay, the distribution policy of a company are important determinants of the function of the मार्केटिंग. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट भी माना जाता है मार्केटिंग का. ओके,
And the last P in the fourth piece is promotion. Okay, so promotion stands for activities that communicate the merits of the product and persuade target consumer to buy it. What does it mean? प्रमोशन से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट का क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या यूटिलिटी है. ओके, एंड जो टारगेट कंज्यूमर है उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है वो खरीद पाए. ओके, so that communication, okay, or that expression is known as promotion. Okay, strategies are needed to combine individual methods such as advertising, personal selling, sales promotion into coordinated campaign. Okay, in addition, promotional strategies must be adjusted as a product move from an earlier stage to a later stage of its life. Modern marketing is highly promotional oriented, so as we all can see, YouTube, Insta, wherever there are just ads and ads, that is mean promotion. Okay, so in modern marketing, highly promotional is a product is highly promotional oriented. Okay, so promotion techniques. So promotion technique में दो broad division किया गया है, personal selling and non personal selling. Personal selling means door to door, एक पर्सन जाके वो प्रोडक्ट या सर्विस को बेचेगा, दैट इज नॉन एज पर्सनल सेलिंग. नॉन पर्सनल सेलिंग मीन्स नॉट डोर टू डोर बट टू ओवरऑल पब्लिक, दैट इज नॉन एज नॉन पर्सनल सेलिंग. ओके, इन नॉन पर्सनल सेलिंग यू कैन गेट लाइक एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, लाइक दैट. ओके, नाउ personal selling. So personal selling, as I already told, it's like going door to door, okay, face to face. Okay, it's an oral communication between buyer and the seller. Okay, it's the oldest forms of promotion. It may initially focus on developing and first personal selling में सबसे पहला relationship बनाते हैं, फिर वो potential buyer है कि देखते हैं and then he will sell that to him. Okay, personal selling suffers from a very high cost. बहुत कॉस्ट होता है पर्सनल सेलिंग में, क्योंकि वो हर पर्सन को वो कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है वो कंपनी को. सो इट्स अ वेरी हाई कॉस्ट गेम. ओके, नाउ गोइंग टू दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ promotion, that is advertising. Advertising is a non-personal, okay, highly flexible and dynamic promotional method. Okay, it's a dynamic, it can change and it can be flexible. Okay, a sale is function of several variables out of which advertising is only one. So sale में एक फंक्शन या एक वेरिएबल माना जाता है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग को सिर्फ एक एक्सपेक्ट माना जाता है. ओके, choice of appropriate media is important for effectiveness of the message. So appropriate media चुनना बहुत important. Like if you want to give some job related advertising, then you should consider newspaper. Okay, because newspaper is read by students or older groups. Okay, the serious ones. Okay, and they are like searching for jobs or investment related advertisement. And like for clothing or for foods related advertisement, you can go over the social medias. Okay, likewise you have to choose the media. Okay, choose the media or medium. Okay, so the magazine, hoardings, display boards, radio, television and internet, these are some of the medias that are available. Okay, the media for advertising also includes pamphlet, brochures and newspapers. Okay, publicity. So publicity is also a non-personal form of promotion similar to advertising. Okay, however no payments are made to the media as in the case of advertising. यहाँ पर मीडिया को कोई फी या पैसा नहीं दिया जाता. Okay, publicity is communication of a product, brand or business by placing information about it in the media without paying for the time or media space directly. Means शायद हम बिना मीडिया को पैसा दिए बिना, like we can give the money to the actor and we can say that just to give 2 lines in a certain movie for that product, just to give 2 lines while giving a speech. Okay, so that will become a publicity promotion. Okay, thus it is a way of reaching customers with negligible cost. Okay,
Basic tools for publicity are press releases, press conferences, reports, stories, and internet releases. Okay, these releases must be of interest to the public. Okay, now going to the another promotion, that is sales promotion. Sales promotion is an omnibus. What does that omnibus means? Term that includes all activities, सारा activities. So sales promotion में सारा आता है that are undertaken to promote the business. Activities like जैसे कि discounts, contest, money, refunds, installments, kickbacks, exhibition, fairs, like vouchers, and it goes on and on. Okay, all these are meant to give a boost to sale. जो सेल को प्रमोट कर पाए उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन. Sale promotion done periodically may help in getting a larger market share to an organization. Okay, so as we have already studied that pricing policy में दो pricing policy लिया जाता है, like skimming pricing policy and penetration pricing policy. So skimming pricing policy and penetration pricing policy क्या होता है and किन के ऊपर लगा जाता है, let's see that. Okay, so skimming pricing policy, prices are set at very high level. Okay, यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा रखा जाता है. द प्रोडक्ट इज डायरेक्टेड टू दोज बायर्स हु आर रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव. ओके, सो प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाए या प्रोडक्ट का प्राइस कम जाए फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता. दैट इज नॉन एज प्राइस इनसेंसिटिव बट सेंसिटिव टू द नोवेल्टी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. ओके, कुछ नयापन होना चाहिए वो प्रोडक्ट में. ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यू मॉडल ऑफ मोबाइल इज रिलीज बाय आईफोन, वीवो, नेक्स्ट. ओके, वो लोग नया मॉडल रिलीज करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता ही है. ओके, दैट वाज फॉर स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी. नाउ penetration pricing policy. So penetration, as we all know, key to enter or to go through the market. Okay, to enter the market. Okay, so market को enter करने के लिए like everyone rational customers कैसा होता है, लो प्राइस, लो कॉस्ट, लो सेलिंग प्राइस उनको अच्छा लगता है. सो इन पेनिट्रेशन फर्म कीप्स अ tempting low price for a new product which itself is selling point. A very large number of the potential consumer may be able to afford and willing to try the product. For example, Jio. Okay, Reliance Jio का products. Okay, so that was the complete detail about the 4 P's. But modern marketing mix में it's not about 4 P's at all. Okay, so let's see what it is. So expanded or modern marketing mix. Typically all organizations use a combination of 4 P's in some form or the other. However, the above elements of marketing mix are not fully comprehensive, fully understandable नहीं होता. Okay, it is relevant to discuss a few more elements that may form part of an organizational marketing mix strategy. Okay, so थोड़ा और marketing mix strategy हमें use करना पड़ता है. Okay, they have got more currency value in recent years. Growth of services has its own share for the inclusion of newer elements in the marketing. A few pieces included later are as follows. So first of all, at the traditional or conventional में सिर्फ that 4 P's were there and it's necessary in modern time also that 4 P's. But इन और 3 P's ने क्या किया, 3 P's ने बहुत वैल्यू लाया. ओके, so that's why this 3 more P's are included. Now it becomes 7 P's. So these 3 P's are people, process and physical evidence. It's from seller's perception. Let's see from buyer's perception. So people means people कितना हम लोग केयर कर पाए एज अ ह्यूमन बींग उनको दूसरा ह्यूमन बींग को. सो कैरिंग. प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रहा है. ओके, द लिंकेजेस बिटवीन द फंक्शंस वेदर इट इज कोऑर्डिनेटेड और नॉट. एंड द फिजिकल एविडेंसेस. ओके, फिजिकल एविडेंस मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, comfort. Okay, so from a buyer's perception it will be comfort. Okay, so let's study this 3 P also in detail. Okay,
So people, process and physical evidence. So people, all human actors who play a part in delivery of the marketing offering and thus influence the buyer's perception, namely the firm's personal and the customer. सो ह्यूमन एक्टर्स एक पार्ट ऑफ डिलीवरी भी माना जाता है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग भी माना जाता है, जो इन्फ्लुएंस करता है बायर्स का परसेप्शन को, ताकि वो फर्म को जान पाए या वो फर्म का रेपुटेशन को बढ़ा पाए. ओके, सो पीपल आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सेकेंड, प्रोसेस. So the actual procedures or mechanism and flow of activities by which the product service is delivered, that is known as process. Physical evidence. So environment in which the market offering is delivered and where the firm and customer interact. Okay, that is known as physical evidences. Okay. सो डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स होता है, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, एनलाइटेंड मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग. So we will study all of this in detail. Okay, but many of them you might be already guessed through their name only. Okay. So social marketing, so it refers to the design, implementation and control of programs seeking to increase the acceptability of social ideas. Social ideas means overall as a society. Okay, सोसाइटी का आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए ये मार्केटिंग किया जाता है. सोशल आइडियाज, कोर्स, practice among a target group. Okay, example, the publicity campaign for prohibition of smoking in Delhi explain the place where one can and can't smoke. Okay, so it's an example for social marketing. Augmented marketing. So augmented marketing means जो additional benefits या additional services दिया जाता है through high tech, okay, technology या इंट्रोडक्शन ऑफ हाईटेक सर्विसेज के थ्रू दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग. लाइक मूवीज ऑन डिमांड, ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Such innovating offering provide a set of benefits that promise to elevate customer service to unprecedented levels. Services marketing. So जो भी टूल्स, टेक्निक या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है ताकि सर्विसेज का मार्केटिंग हो जाए, सो दैट इज नोन एज सर्विसेज मार्केटिंग. लाइक सर्विसेज लाइक हेयर स्टाइलिंग, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, like that. Okay, services in is any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible. Okay, जो टैंजिबल नहीं है. ओके, मीन्स कोई गुड नहीं है या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. ओके, सो दैट विल कंसिडर एज सर्विसेज एंड डज नॉट रिजल्ट इन द बैंकिंग, सेविंग्स, रिटेलिंग, एजुकेशनल यूटिलिटीज. ओके, direct marketing. Direct marketing through various advertising media that interact directly with consumer. Okay, generally calling for the consumer to make a direct response. So direct marketing includes catalog selling, email से भी customer feedback आता है, telecommuting, electronic marketing, shopping and TV shopping. So shopping या electronic shopping या TV shopping, यहाँ से हम कॉल करते हैं एंड उनको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा था. सो लाइक दैट इज नॉन एज डायरेक्ट सेल मार्केटिंग. ओके, रिलेशनशिप मार्केटिंग. सो रिलेशनशिप मार्केटिंग मीन्स एक ऑलरेडी एक जो कस्टमर बेस बन चुका है तो उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना एंड उनको और अच्छा तरीके से सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करना. ओके, दैट इज नोन एज रिलेशनशिप मार्केटिंग. सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लैडेड रिलेशनशिप with customers and other stakeholders. Like example, airlines offer special lounges at major airports for frequent flyers, thus providing special benefits to select customers to strengthen bonds. It will go a long way in building relationship.
So enlightened marketing. So what is enlightened marketing? So it is a marketing philosophy holding. Okay, philosophy marketing का जो philosophy होता है उसको hold करके रहना, that is known as enlightened marketing. That a company's marketing should uh, like एप्पल का जो मार्केटिंग होता है दे होल्ड द वैल्यू. ओके, they hold the value, that is known as enlightened marketing. Okay, so it is a marketing philosophy holding that a company's marketing should support the best long run performance of the marketing system. Its 5 principles include customer oriented marketing, innovating marketing, value marketing, sense of mission marketing, and societal marketing. Okay, person marketing. So people are also marketed. खुद means people, खुद को बेचा जाता है. Okay, so let's see what does that mean. So person marketing consists of activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behavior towards particular person. Okay, so like example, politicians, sports stars, film stars etc market themselves to get vote. Okay, जैसे कोई पिक्चर हो जाता है तो उनके बाद क्या करते हैं, वो लोग खुद प्रमोशन के लिए चले जाते, दैट इज नॉन एज पर्सन मार्केटिंग. मार्केट देमसेल्व्स टू गेट वोट्स और टू प्रमोट देयर करियर्स. ओके, प्लेस मार्केटिंग. प्लेस मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टूवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेसेस. ओके, सो कुछ प्लेसेस को के बिहेवियर या जो थॉट्स है वो प्लेस के ऊपर, ओके, उसका एटीट्यूड्स या बिहेवियर चेंज करने टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसको बोला जाता है प्लेस मार्केटिंग. सो बिजनेस साइट्स मार्केटिंग, टूरिज्म मार्केटिंग, लाइक दैट इट इज डन. ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग. सो it consists of activities undertaken to create, maintain and change attitudes and behavior of target audiences towards an organization. So organization के रिगार्डिंग एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा दिखाने या बुरा दिखाना. ओके, सो टू प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द प्रोडक्ट और एनीथिंग, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग. ओके, बोथ प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन marketing. So Tata and they all do it. Okay, differential marketing. So it is a market coverage strategy in which a firm decides to target several market segments and design separate offer for each. Okay, so हर एक different targets को different डिज़ाइंस बेचा जाता है. ओके, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग. ओके, डिफरेंट सेगमेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज. ओके, concentrated marketing. So it is a market coverage strategy in which a firm goes after a large share of one or few sub markets. So a chunk or in a bulk में बल्क शेयर ऑफ मार्केट को कैप्चर करने के लिए मार्केटिंग किया जाता है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग. सिंक्रो मार्केटिंग. सिंक्रो मार्केटिंग मीन्स सिंक्रोनाइजेशन मार्केटिंग मीन्स लाइक दिवाली के टाइम दिवाली प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग किया जाना, या व्हेन रेनी सीजन होता तभी अम्ब्रेला का मार्केटिंग किया जाना. सो दैट इज सिंक्रोनाइजेशन मार्केटिंग. व्हाट डज दैट मीन? व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इर्रेगुलर ड्यू टू सीजन, सम पार्ट्स ऑफ द डे और एन हार बेसिस, causing idle capacity or overwork capacity. Synchro marketing can be used to find ways to alter the pattern of demand. Like ज़्यादातर डिमांड रेनी सीजन में अम्ब्रेला का होता है, बट क्या करेंगे सिंक्रो मार्केटिंग में वो डिमांड को एटलीस्ट कंसिस्टेंट करने के लिए दूसरा सब सीजन में वो लोग क्या करेंगे, छाता को डिस्काउंट प्राइस में बेच देंगे. ओके, सो that is known as synchro marketing, and it can be done through flexible pricing, as I said now, promotion and other incentives. Okay, demarketing. It includes marketing strategies to reduce demand temporarily या permanently. Okay, the aim is not to destroy demand. डिमांड को ख़त्म करना नहीं होता, बट टू रेड्यूस इट या शिफ्ट इट. ओके, दिस हैपेंस व्हेन देयर इज ओवरफुल डिमांड. ओके,
Like in example, zoological parks are overcrowded on Saturday, Sunday and holidays. So here demarcating can be applied to regulate demand, ताकि वो सैटरडे संडे का दिन का डिमांड कम करने के लिए यहाँ demarcating अप्लाई किया जा सकता है. ओके, now we end the first function, that is marketing. Now we'll go to second function, that is supply chain management. Okay, so सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन्स जो सप्लायर होता है वो कैसे प्रोड्यूसर को दिया जाता है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स बनने के बाद कस्टमर्स तक कैसा पहुंचाया जाता है, दैट इज नॉन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, द टर्म सप्लाई चेन रिफर्स टू द लिंकेजेस बिटवीन सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स. Supply chains involve all activities like sourcing and procurement of material, conversion and logistics. So सप्लाई चेन में ये तीनों चीज़ इंक्लूड होता है. सोर्सिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल कहाँ से इनपुट मीन्स मटेरियल कहाँ से लिया जाएगा. कन्वर्शन, उनका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर कैसा होगा. एंड लॉजिस्टिक, कैसा रिटेलर या इनपुट प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरर तक कैसा पहुंचाएगा, दैट इज़ लॉजिस्टिक. ओके, सो सप्लाई चेन में ये है, ये तीनों एक्टिविटीज़ किया जाता है. ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ सप्लाई चेन्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग द सप्लाई चेन ऑपरेशन. जो सप्लाई चेन ऑपरेशन एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है उसको प्रोसेस या प्लान करना या इम्प्लीमेंट करना या उनको कंट्रोल करना, दैट इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, so it is a cross functional approach. Okay, it is a cross functional approach to managing the movement of raw materials into an organization. Okay, पहला तो रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना और फिर फिनिश गुड को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मीन्स एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना. ओके, सो दैट इज क्रॉस फंक्शनल अप्रोच. ओके, it encompasses all movement and storage of raw materials, work in progress, inventory and finished goods from point of origin to point of consumption. means कहाँ से origin जहाँ से के उधर से लेके कंज्यूम किधर तक हो उधर तक जो भी मूवमेंट है वो सब इसमें encompass हो जाता है. ओके, supply chain management is a tool of business transformation and involves delivering the right product at the right time to the right place and at the right price. Okay, it reduces cost of logistics of an organization and enhances customer service by linkages between suppliers, manufacturers and customer. Supply chain management is an extension of logistic management. So supply chain management के अंदर एक छोटा सा पार्ट बोला जाता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ब्रॉडर इन टर्म. ओके, सो you can see an example of supply chain structure. Now let's go ahead with logistic management. So management of logistics is a process where integrates the flow of supplies into, through and out of the organization. Flow of supply into means input, through means through and out of an organization. Okay, to achieve a level of service which ensures that the right materials are available at the right place, right time, right quality and at the right cost. Organizations try to keep the cost of transporting materials as low as possible, consistent with safe and reliable delivery. Okay, logistic management is a small portion of supply chain management. Logistic management, as I already told, it's a small portion of supply chain management that deals with management of goods in a efficient way. जो management of goods efficient way में deal करते हैं उसको क्या बोलते हैं, logistic management. Okay, supply chain management helps in logistics and enables a company to have constant contact with its distribution team, which could consist of trucks, trains and other modes of transportation. So improvement in logistics can result in saving in cost. Yes, logistics improve करने से cost बचाया जा सकता है. These savings can also reveal in the profit of the company. So and वो जो savings जो cost को बचाकर savings जो किया वो it can reveal in the profit of the company as well. So
Some examples of how logistics can help a business are as follow: cost saving, that is one; reduced inventory, improved delivery time, customer satisfaction, and the last one is competitive advantages. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अभी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सो अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्स अ चेंज फ्रॉम मैनेजिंग इंडिविजुअल फंक्शन टू इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज. सो अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंडिविजुअल फंक्शन लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वो वैसा वी डोंट हैव टू think in individual manner. We have to integrate the activities into key supply chain process. Okay, then only it will be effective, and then only it will lead to profitability of the company. So it involves collaborative work between buyers and sellers. That is one. A key requirement for successful implementing supply chain will be network of information sharing and मैनेजमेंट. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आउटसोर्सिंग किया जा सकता है, कस्टमर सर्विसेज लिया जा सकता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जा सकता है. सो अभी लेट्स सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो द मीनिंग इज management of logistic is the process which integrates the flow of supplies into, through and out of an organization. Okay, likewise supply chain management का definition क्या है? The term supply chain refers to the linkages between suppliers, manufacturers and customers. Okay, logistic management का objective क्या है? Customer को satisfy करना. Okay, supply chain management का objective क्या है? Competitive advantage मिलना. Evolution, the concept of logistic has been evolved earlier. Logistic पहला से ही था. Okay, logistic means taking one product to other place. Okay, supply chain management is a modern concept. So supply chain अभी आया है. Okay, one in another. So logistic management is a fraction of supply chain management. जो supply chain management उसका एक छोटा सा fraction logistic management माना जाता है. Likewise, supply chain management is the new version of logistic management. So supply chain तो अभी just आया है, and it is very wide. It is a broad concept, and it is also considered as the new version of logistic management. Okay, in logistic. Okay, in logistical activities typically include management of inbound, outbound goods. Okay, transportation, warehousing, handling of material, fulfillment of orders, inventory management, supply demand planning. Okay, naturally, now in supply chain management, naturally management of supply chains includes closely working with channel partners, suppliers, intermediaries, other service providers and customers also. So here you can see the example like what is logistic. Logistic means just a means of or way through which a particular good can transfer from one place to another. That is logistic management. Supply chain management is the linkages between manufacturer and that customers, so that it can gain a competitive advantages. Okay, that is known as supply chain structure. Now financial strategy. Okay, so the financial strategies of an organizations are related to several areas of financial management considered central to strategy implementation. Okay, so बहुत I think it's financial strategies सारा areas में ही cover होता है. Okay, this includes capital structure decision. You must have studied in FM. Developing projected financial statement या budgets कैसे बनाना. मैनेजमेंट में उसका यूसेज या एप्लीकेशन जो भी फंड है उसका. इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ अ बिजनेस. strategists need to formulate strategies, that is to plan in these areas so that they are implemented. Okay, so strategies को formulate करना पड़ेगा according to the area I just mentioned now, and they have to be implemented. Okay, for example, some of financial decisions are to raise capital with short term debt, long term debt. शॉर्ट टर्म डेट लेंगे या लॉन्ग टर्म डेट, प्रिफर्ड स्टॉक लेंगे या कॉमन स्टॉक लेंगे. टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा. लीज और बाय फिक्स्ड एसेट, लीज में लेना है या फिक्स्ड एसेट को ओन करना है. टू एस्टैब्लिश अ सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ओके, डिस्काउंट कितना देना. ओके, एक स्पेसिफाइड
पीरियड ऑफ टाइम तक, ओके, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी केप्ट ऑन हैंड, ओके, कितना कैश इन हैंड होना चाहिए, ओके, for the proper working of the capital, okay, to extend the time of accounts receivable. So these are some of the financial, is just an examples, okay, examples of some of the financial decisions that have to be taken. Evaluating the worth of a business, okay, so evaluating the worth of a business is central to strategy implementation because integrative, intensive diversification strategies are often implemented by acquiring other firms, okay, so integrate या इंटेंसिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन हम वी ऑलरेडी स्टडीड, ओके, सो ये सब किया कैसे जाता है, बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स, ओके, दूसरा फर्म को एक्वायर करके या सेल ऑफ करके ही किया जाता है. सो वो अदर फर्म का वैल्यू क्या होगा, ओके, सो वो वर्थ ढूंढने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया. सो अदर स्ट्रैटेजीज सच एज रिट्रेंचमेंट में रिजल्ट इन द सेल ऑफ अ डिविजन ऑफ अ फर्म इटसेल्फ, ओके. So various approaches for determining a business worth can be grouped into three approaches, okay. So the first approach is net worth approach, or the worth of a business in determining its net worth or stockholders equity, okay. So share capital जितना भी amount है वो लिख देना, add कर देने का resource and surplus, and you can reduce the goodwill, okay. Add undervalued asset, okay, less overvalued asset, you will get the net, the present exact worth of that company, okay. Second approach to measuring the value of a firm, एक thumb rule दिया गया है, okay, we never know whether it's perfect or not, but yes, it's a thumb rule. A conservative rule of thumb is to establish a business worth as 5 times the firm's current annual profit. जो भी current annual profit है उसका 5 टाइम कर दो, that will be considered as a value of firm. This is the second approach. Now the third approach. So in third approach there are 3 methods, okay. Let's discuss one by one. So फर्स्ट मेथड इज फर्म्स वर्थ, ओके. सो सिमिलर, मतलब जो कंपनी का हम लोग को वैल्यू ढूंढना है, ओके, सो उसका सिमिलर कोई कंपनी ढूंढने का सबसे पहला, एंड वो कंपनी कितना में बिकी हुई है इन दी हिस्ट्री और इन दी पास्ट, ओके, वो चेक कर देने का, यू विल गेट द फर्म्स वर्थ. सेकेंड मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो. सो प्राइस अर्निंग रेशियो इज वी कैन गेट इट थ्रू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर, ओके. And the third method is outstanding shares method, okay. So जो outstanding share है, जो means actual जो market में जो shares बिका हुआ है, okay, that is known as outstanding, means in listed companies, okay. That is the example that I have given. So outstanding shares method is equal to number of shares into market price, okay. Now the production strategy, okay, एक product या service को produce या manufacture कैसा किया जाता है, okay. So let's study this. The production system is concerned with the activities directed towards creation of products and services. Is directed towards what? Creation of products and services for the customers. It covers factors such as capacity, location, layout, design, work system, automation, and so on. Decisions are long terms in nature. Production system affects the followings. क्या क्या affect करते हैं? What products are offered? प्रोडक्ट और सर्विसेज का नेचर क्या है, विच मार्केट, कौन सा मार्केट को टारगेट करना है, हाउ दिस मार्केट्स आर सर्व्ड, ओके. जो ऑलरेडी जो मैनर इन द मार्केट, मतलब मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स कैसा बिक रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा, दैट इज द मैनर इन विच मार्केट टू बी सर्व्ड, ओके. प्रोडक्शन ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल. सो इट इज़ एन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, material supply, inventory, cost, quality management and maintenance of plant and equipment, okay. So ये सब क्या था, तो here the aim of the strategy implementation is to see how efficiently resources are utilized. जो resources कैसे efficiently utilize हो रहे डे टू डे ऑपरेशन में, so that long term objectives हम fulfill कर पाए, okay. Operations planning and control provides an example of an organizational activity that is aimed at translating the objectives into reality, okay. So objectives को reality में convert करने वहाँ पर operation planning and control किया जाता है, okay. Some company use quality as a strategic tool. Yes, even quality check भी
स्ट्रैटेजिक टूल माना जाता है. ओके, now research and development strategy. Okay, so research and development, okay, means research करना या development means जो changes हो रहा है उसको पढ़ना. Okay, that is development. So R&D personnel can play an integral part in strategy implementation. Okay, these individuals are generally charged with developing new products and improving old products. एक तो नया प्रोडक्ट बनाना या फिर ओल्ड प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना. ओके, इन अ वे दैट विल अलाउ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. ओके, strategies such as product development, market penetration, concentric diversification require that new products be successfully developed and that old products be significantly improved. Okay, technological improvements that affect consumer and industrial products and services shorten product life cycles. R&D policies can enhance strategy implementation efforts too. So it can emphasize product or process improvement. Okay, product या process का improvement, that is one. Be leaders or followers in R&D. R&D सब हर एक इंडस्ट्री में हर एक कंपनियाँ नहीं करते. So it you can become the leader or follower in the R&D. Develop robotics or manual type processes. Spend high average or low amount of money or R&D. Perform R&D within the firm. Okay, within the firm भी R&D किया जा सकता है खुद का कॉस्ट के ऊपर, या फिर हम लोग आउटसोर्स भी किया जा सकता है, और टू कॉन्ट्रैक्ट R&D टू आउटसाइड फर्म्स. यूज यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स और प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स. यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के ऊपर जाना या फिर प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स को हम लोग एक्वायर करना. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड सो दैट वी कैन गेट द R&D पॉलिसीज इफेक्टिव. ओके, देयर मस्ट बी इफेक्टिव interactions between R&D departments and other functional departments in implementing different types of generic business strategies. A critical question is whether the firm should develop research and development expertise internally. वो खुद का कंपनी में खुद R&D करना चाहिए या फिर कोई आउटसाइड या एक्सटर्नल एजेंसी से लाना चाहिए. ओके, सो द एक गाइडलाइन दिया है सो दैट वी कैन गेट टू द पॉइंट वेदर वी हैव टू गो फॉर इंटरनली और एक्सटर्नल. ओके, सो इनका दो क्राइटेरिया है. मेन क्राइटेरिया इज टेक्निकल प्रोग्रेस एंड मार्केट ग्रोथ. सो इफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज स्लो and market growth is moderate, yes, we can do in-house R&D. Okay, and it will, if you are doing an in-house R&D, then it will significantly act as a barrier to new entrants. Okay, now if technical progress is fast, very much fast, and market growth or the company's growth is slow, so R&D may be very risky and we have the only option is to outsource. Okay, if technical progress is slow, technical progress slow है but market growth बहुत fast है. Okay, so कंपनियाँ बहुत आगे चल रही है, so no enough time for in-house R&D, so उतना time नहीं कि in-house R&D करे, so we have to outsource there also. If both are fast, technical progress and market growth, then of course outsource only. Okay, so R&D, but here the outsource should be done from an expertise or well established firm in an industry. Okay, that was for R&D. Now let's study human resource strategy. Okay, so the human resource management helps the organization to effectively deal with the external environmental challenges. The function has been accepted as a partner in the formulation of organization strategies and in the implementation of such strategies through human resource planning, employment, training, appraisal and rewarding of personnel. Okay, so ये सब चीज़ को implement formulate किया जाता है in HR. The human resource department must develop performance incentives that clearly link performance and pay to strategies. Okay, so ऐसा डेवलप ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी ऐसा लाना चाहिए ताकि जो पे कर रहे हैं वो डायरेक्टली परफॉर्मेंस से लिंक हो जाए. ओके, अ वेल डिजाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम कैन फेल इफ सफिशिएंट और इफ इनसफिशिएंट अटेंशन इज गिवन टू द ह्यूमन रिसोर्स डायमेंशन. ज़्यादा अटेंशन दिया जाएगा HR में, HR रिलेटेड थिंग्स में, सो शायद से वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फेल हो सकता है. ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं जब
स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करने जाते, तो जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन ओके ऑफ सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, फेलियर टू मैच इंडिविजुअल्स एप्टीट्यूड्स विथ इम्प्लीमेंटेशन टास्क ओके, वो इंडिविजुअल को कॉम्पिटेंस मैच नहीं कर पाते जो टास्क उन्हें देते हैं, एंड इन एडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़, मीन्स टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करते फॉर इम्प्लीमेंटिंग दी एक्टिविटीज़ ओके. सो कॉमनली यूज मेथड दैट मैच मैनेजर्स विथ स्ट्रैटेजीज टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो स्ट्रैटेजी बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इंक्लूड ट्रांसफरिंग मैनेजर्स ओके, मैनेजर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, डेवलपिंग लीडरशिप वर्कशॉप लीडरशिप वर्कशॉप्स किया जाता है, लीडरशिप वर्कशॉप्स किया जाता है, ऑफरिंग करियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, करियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का ऑफर्स दिया जाता है या फिर प्रमोशंस किया जाता है ओके. सो लाइक दैट वे implementation can be done okay. Achieving competitive advantage, let's see that. So in HRM the strategist tries to achieve a competitive advantage for his organization okay. The competitive advantage may be in the form of low cost relationship या फिर uniqueness, that is differentiations along dimensions that are widely valued by the customer in particular and the society at the large okay. The role of human resources is in enabling the organization to effectively deal with the external environmental challenges okay. So human resource external environmental challenges को deal कैसे करेंगे. The human resource management function has been accepted as a strategic partner in formulation of organization strategies okay, and in implementation of such strategies. The following points should be kept in the mind okay. So these are the points that have to be kept in the mind so that human resource can very well achieve the objectives with which the firm is going. So recruitment and selection. So जो competent applicants है उनको ही recruit करना okay. Training, जो वर्कफोर्स है उनको ज़्यादा और competent बनाना, well trained करना, well know how बताना okay, ज़्यादा knowledge देना. अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म अच्छा करेगा उनको उनका अप्रेजल कर देना लाइक बाय गिविंग प्रमोशन एंड ऑल, इंसेंटिव्स पर्क्स एंड ऑल ओके, या बाय कोचिंग, बाय गिविंग काउंसलिंग, बाय गिविंग ट्रेनिंग्स ओके. सो दैट कैन बी डन फॉर द डेफिशिएंसी, जो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे उनको काउंसलिंग दिया जा सकता है, कोचिंग दिया जा सकता है एंड ट्रेनिंग दिया जा सकता है ओके. Compensation. A firm can usually increase the competency of its workforce by offering pay and benefit packages okay, that are more attractive than those of the competitors. This practice enables organization to attract and retain the most capable people okay. So आज के कंपटीशन में क्या हो रहा है, एक फर्म जो अच्छा एक केपेबल एम्प्लॉय उनको they want that employee in their firm okay, but the other firms don't want the employee to go or to leave that firm, that their own firm okay. So that's why the firms are fighting to give more benefit and more packages to that employee okay, so that he can stay in that firm okay. That is known as compensation. SHRM. So we study HRM. Now what is the strategic human resource management okay. So the human resource strategy of a business should reflect and support the corporate strategy. So corporate strategy को human resource strategy help या support करना चाहिए okay. So an effective human resource strategy includes the way in which the organization plans to develop its employee and provide them suitable opportunities and better working conditions so that their optimal contribution is ensured. So they are doing their best to achieve the objectives of the company, but for that company also have to give them the better working condition, better opportunity, so that they can optimally contribute for which they are to be ensured okay. The success of an organization depend on its human resource. This means how they are acquired, developed, motivated, retained. Organization play an important role in organizational success okay. So the human resource management practices of an organization may be an important source of competitive
advantage. For this, strategic focus should be given on the following points: pre-selection practices, selection practices, and post-selection practices. Okay, the prominent or important area where the human resource manager can play strategic role are as follows. Okay, so human resources का strategic या बहुत important role कहाँ play कर सकता है? Let's see. Providing purposeful direction. So the human resource manager must be able to lead people. Okay, एक direction मतलब एक leadership होना चाहिए. Okay, so that they can direct the other group of people to do certain kind of work. Okay, and the organization towards the desired direction, involving people right from the beginning. The most important task of HR manager is to ensure that objectives of an organization are internalized by each individual working in the organization. Okay, building core competency. The human resource manager has a great role to play in developing core competency by the firm. So ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का बहुत बड़ा रोल माना जाता है. कॉम्पिटेंसी मीन्स द नो हाउ, द नॉलेज एक फर्म का कितना है वो डिसाइड करने में. ओके, अ कोर कॉम्पिटेंस इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मे नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स. दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी. It needs creative, courageous and dynamic leadership having faith in organization human resources. Okay, creating competitive advantage. Okay, so creating and maintaining a competitive advantage in the globalized market is the object of any organization. कोई भी organization का उनका क्या है, एक competitive advantage हो सके दूसरा competitor से. Okay, that is the main object of any organization. There are two important ways a business can achieve a competitive advantage over the others. Let's see. So we already know one way is the cost leadership and the other way is differentiation, that is to be unique, and in cost leadership is to cut off or lowering the cost. Okay, that is cost leadership. Okay, now facilitation of change. The human resource manager will be more concerned with substance rather than form, accomplishments rather than activities, practice rather than theory. What does all this mean? Means फॉर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंस सब्सटेंस को देंगे, एक्टिविटीज से ज़्यादा accomplishments को देखेंगे. मतलब जो प्रोसीजर्स है उनके ऊपर they will not think much, but if they are getting the result, desired results, okay, if it's not the theory, but if the practical is done at a smooth way or at a great way, then yes, the human resource manager is concerned to that. Okay, the HR function will be responsible for furthering the organization, not just maintaining it. Okay, human resource manager will have to devote more time to promote changes than to maintain the status quo. Okay, so what does that mean? Human resource manager will have to devote more time to promote changes. Okay, चेंज लाने के लिए उनको ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा rather than to maintain that status. Okay, managing workforce diversity. So in modern organization, management of diverse workforce is a great challenge. Workforce diversity can be observed in terms of male, female, young, old, educated, uneducated, skilled, unskilled, professional, not professional. So these are different diversity of workforce a company may have, okay, or an organization may have. Moreover, many organizations also have people of different caste, religion, nationalities. Okay, the workforce in future will comprise more of educated and self-conscious workers. They will ask for higher degree of participation and avenues for fulfillment. Money will no longer be sole motivating force in future or for the majority of the workers. Non-financial incentives will also play an important role in motivating the workforce. Empowerment of human resources. So ह्यूमन रिसोर्स को एम्पावर्ड फील करवाना, पावर्ड फील करना. ओके, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. सो एम्पावरमेंट मीन्स ऑथराइजिंग एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
हर एक मेंबर को एक अथॉरिटी देना, एक ओके, टू टेक अप हिज और हर ओन डेस्टिनी, रियलाइजिंग हिज और हर फुल पोटेंशियल. It involves giving more power to those who at present have little control what they do and little ability to influence the decisions being made around them. Development of work ethics and culture. As changing work ethic requires increasing emphasis on individuals, jobs will have to be redesigned to provide challenges. Even the newer workforce is looking after the challenges, okay, not just for doing that repetitive work. Flexible starting and quitting times for employees may be necessary. Focus will shift from external to intrinsic motivation, internal motivation, okay. अभी आगे का वर्कफोर्स दे विल नॉट go for extra 1000 rupees or extra money or extra car or bikes and all. No, they are going for the intrinsic motivation for their own development, for their empowerment, okay. So that will become the major appreciation of their work. A vibrant work culture will have to be developed in the organization to create an atmosphere of trust among the employees and to encourage creative ideas by them. एक vibrant work culture होना चाहिए, okay. So so that each and every employees can trust each other, okay, and they can get the creative ideas so that the firm gets or the organization grow, okay, with them, okay. So this is chapter number 6, functional level, okay, or operational level. So thank you for watching this.